In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope all of you are doing well. Today we will discuss the translation of Chapter 1, English Book of 9th Class. Unit 1, The Savior of Mankind. Savior, सेव करने वाला, बचाने वाला, निजात दिलाने वाला, निजात दहिंदा. Of mankind, इंसानियत का. The Savior of mankind, इंसानियत का निजात दहिंदा. Refers to the personality of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now come to the text. Paragraph number 1. अरेबिया. अरेबिया अरब की सरजमीन को कहा जाता है. Is the land, land सरजमीन of unparalleled, unparalleled, unmatched, बेमिसाल, चाम, दिलकशी and beauty, हुसन या जमाल. With its trackless deserts, trackless बेरास्ता या बेरा, track रास्ता, trackless बेरास्ता. Deserts सहराओं, of sand dunes, sand dunes रेत की टीलों. In the dazzling rays, dazzling rays means बहुत तेज लाइट वाली, चुंदिया देने वाली शुआएं. Of the tropical sun, tropical, very hot, गर्म सूरज. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun. गर्म सूरज की चुंदिया देने वाली शुआओं में रेत की टीलों के अपने बेरास्ता सहराओं के साथ अरब एक बेमिसाल, दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है. Its starry sky, starry sky, तारों भरा आसमान. Has excited, excited यहाँ पे has के साथ यूज हुआ है, मीन्स थर्ड फॉर्म है excite की. जोश बख्शता है. The imagination, imagination तखय्युल, सोच, thought of poets, शायरों के, and travelers, मुसाफिरों के. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसका तारों भरा आसमान शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को जोश बख्शता है या जिला बख्शता है. It was in this land, ये इसी सरजमीन में था, that the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born, born पैदा हुए, in the city of मक्का, मक्का के शहर में, which is about 50 miles from the Red Sea, 50 मील दूर बहरे अहमर से. फिर रेड सी, बहरे अहमर. It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. ये इसी सरजमीन में था जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का जो कि बहरे अहमर से 50 मील के फासले पर है, ये 50 मील दूर है, में पैदा हुए. Now come to the paragraph number 2. The Arabs possessed, possessed मालिक थे या रखने वाले. पोजेशन मीन्स मलकियत, किसी चीज की मलकियत को रखना पोजेशन में आता है. अ रिमार्केबल मेमोरी, रिमार्केबल मेमोरी शानदार हाफजा या याददाश्त. एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, एलोक्वेंट फसीहो बलीग, पीपल लोग. द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल. अरब एक जबरदस्त हाफजा का मालिक और फसीहुल लिसान लोग थे. फसीहुल लिसान यानी जिनकी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा जरखेजी होती है, इसको हम कहते हैं एलोक्वेंट पीपल. देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी, एलोक्वेंस फसीहुल लिसानी या फसाहत बलागत, ऑफ एंड मेमोरी और यादाश्त, फाउंड एक्सप्रेशन इजहार पाया, इन देयर पोएट्री उनकी शायरी में. देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोएट्री, इनकी फसाहत बलागत और हाफजे ने इनकी शायरी में इजहार पाया. एवरी ईयर हर साल, अ फेयर, फेयर मीन्स मेला. फेयर एक कम्प्लेक्शन वाला भी फेयर होता है, लेकिन इसमें मेला आएगा. वॉज हेल्ड, मुनक्कद किया जाता था. हेल्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ होल्ड. फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशंस, पोइटिकल शायराना, कॉम्पिटिशंस मुकाबलों का. एट ओकाज, ओकाज के मुकाम पर. एवरी ईयर अ फेयर वॉज हेल्ड फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशंस एट ओकाज. ओकाज के मुकाम पर हर साल शायरी के मुकाबलों के लिए एक मेला मुनक्कद किया जाता था. इट इज नरेटेड दैट, ये बयान किया जाता है, नरेटेड बयान किया, दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद. इट इज नरेटेड दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, ये बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, रिसाइट टू यू सुना सकता हूँ,
آپ کو. فار ایچ لیٹر ہر حروف تہجی سے, آف دا الفابیٹ حروف تہجی کے تمام حروف سے. فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ حروف تہجی کے تمام حروف سے, ہر ایک حرف سے. 100 لانگ پوئمس 100 سے زائد نظمیں. وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز, وداؤٹ ٹیکنگ بغیر شمار کیے, انٹو اکاؤنٹ بغیر شمار کیے, شارٹ پیسز چھوٹے حصوں کو یا چھوٹی نظموں کو. اینڈ آل آف دیٹ واز کمپوزڈ, اور یہ تمام لکھی گئی ایکسکلوزیولی بائی پوئٹس, ایکسکلوزیولی اسپیشلی خصوصی طور پر بائی پوئٹس شاعروں کے ذریعے, بفور دا پروملگیشن نفاذ یا اعلان, آف اسلام اسلام سے, بفور دا پروملگیشن آف اسلام اسلام کے نفاذ سے پہلے. I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 طویل نظمیں سنا سکتا ہوں, اور وہ سب جو شعراء نے اسلام کے نفاذ سے پہلے خصوصی طور پر لکھی. It is no small wonder چھوٹا معجزہ, that Allah Almighty اللہ قادر مطلق, Almighty جو قدرت رکھتا ہو, ہر چیز پر قادر ہو, choose the Arabic language انتخاب کیا, second form of choose انتخاب کیا عربک لینگویج عربی زبان کا, for his final dispensation اپنے آخری پیغام کے لیے, final آخری dispensation تقسیم یا پیغام کے لیے, and the preservation of his word اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word. یہ چھوٹا معجزہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کی تقسیم اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے عربی زبان کا استعمال کیا. We'll move to the paragraph number 3. In the 5th and 6th centuries, 5th 5ਵੀਂ and 6th 6th centuries صدی میں, mankind انسانیت stood کھڑی تھی, is the second form of stand, on the verge of chaos, verge کنارہ, chaos تباہی کا یا انتشار کا. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. It seemed that ایسا لگتا تھا, civilization وہ تہذیب, which had taken جس نے لیے 4000 years 4000 سال, to grow بڑھنے میں, پروان چڑھنے میں, had started شروع ہو چکی تھی, crumbling ٹوٹ پھوٹ میں. crumbling کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا, شارٹ پیسز میں ڈیوائڈ ہو جانا. It seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow had started crumbling. ایسا لگتا تھا جس تہذیب کو پروان چڑھنے میں 4000 سال لگے تھے, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو چکی تھی. At this point in time, وقت کے اس مرحلے پر, point in time وقت کا مرحلہ یا وقت کی گھڑی پر, اللہ Almighty اللہ سبحانہ و تعالی یا اللہ قادر مطلق نے raised اٹھایا, پیدا کیا, اور رسول among ایک رسول, among themselves انہی میں سے, to lift بلند کرنا, اٹھانا, the humanity انسانیت کو, from ignorance جہالت, into the light of faith ایمان کی روشنی میں یا نور ایمان میں. At this point in time, Allah Almighty raised our Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. وقت کے اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی یا ایک رسول مبعوث فرمایا, جس نے انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے جانا تھا. Students, we have read the translation of first 3 paragraphs. Remaining translation will be discussed in our next video. Stay blessed.